2025. We are very excited to delve into an incredibly relevant and insightful discussion today at Innov8 Talks. As we explore the topic growing jewelry demand from Tier 2 and Tier 3 cities. Our esteemed moderator for today's session is Mr. Sumesh Vadhera, the Managing Director and Chief Editor of The Art of Jewellery. Sumesh sir, I request you to please join the stage. Sumesh sir brings with him a wealth of industry knowledge and editorial expertise, making him the perfect guide for this important discussion. Joining Sumesh on the panel are Mr. B.A. Ramesh, Joint Managing Director of Thangamayal Jewellery Limited. Sir, I request you to please join him on stage. With his vast experience in growing the brand's presence in southern India, Mr. Ramesh will provide key insights into the growing demand from Tier 2 and Tier 3 cities. Next up, we have Mr. Varghese Alukas, Managing Director of Jos Alukas. He has been instrumental in expanding Jos Alukas beyond traditional markets into smaller cities, making the brand synonymous with the quality jewelry across a wider audience. I request you to please give them a round of applause when they get to the stage. Third, we have Mr. Shrikant Kari, Chairman of the Karnataka State Jewellers Federation. Sir's leadership in Karnataka's jewelry sector provides him with a unique perspectives on the emerging demand in Tier 2 and Tier 3 cities. Finally, we have Mr. Adarsh K. Murthy, President of the Mysore Jewellers Association. Sir's hands-on experience working with the jewellers in the Mysore region makes him well placed to share the growing trends and strategies in the Tier 2 cities. Together, this distinguished panel of industry experts will offer a comprehensive view of growing markets of Tier 2 and Tier 3 cities. Please join me as we give them a huge round of applause. Thank you. Ramesh Anna, coffee with Ramesh Anna. Come. Please come, sir. Okay. So very eminent retailers from South and two big trade associations from South are here with us, represented by their heads. आज का topic interesting है. What we are seeing is there is a lot of new showrooms coming in the smaller cities, Tier 2, Tier 3 cities. Earlier क्या है कि सभी chain store corporates खाली metros and big cities में expansion है, but एक recent study हुआ है उसमें है कि 60% and more new showrooms are coming now in the smaller towns, that is the Tier 1 and Tier 2 smaller population towns. So since you are representing two chain stores and you are representing two associations of Karnataka, tell us something about this trend. What is this new trend in the Tier 2 cities? Starting with you, Varghese bhai. You can have the cordless mic. Okay, so as of us, from Alukas Group, we have almost 40% of our stores or 50% are in two Tier towns in both Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, and even Kerala. Right. So what we see, as you said, 60% has gone up. Right. The one first is like metros have been flooded up with all the jewelries. Another thing is that in the smaller towns, customers look into buying jewelry not only as to wear it as a style statement rather than as an investment purpose. And there are a lot of support from government in the two-tier towns or where government is supporting all this agriculture income and all that, where people are able to invest in gold. That is one thing what we look into. And to operate in a two-tier, three-tier, the inventory is less in the stores. The rent expenses are less. Right. And you can be connected to the customer always, because if you have immediate requirement or any ornament, the customer can take an order and they are connected to the smaller towns. So they can come in 2 or 3 days rather than going to a city to buy for a long time, or if they don't have it, they don't come back again. But in case of smaller town, all these customers are very close, have a relationship with the showrooms and all that. So they can keep coming and asking for their requirement. Right. And another thing, when you have showrooms in the metro, it can be a feeder showrooms and the smaller town which can push the customer for the bigger requirement or some wedding requirement you can push. Like our Thangamayal has a lot of showrooms in two-tier. Recently he started a bigger showroom in Chennai. Where
he get good support from the Different trend. from the customers whom he had from the smaller town. So now he is going to come up with more showrooms in metros, like around Right. 20, 25, Right, what he was right, telling right, me. right. So the customers who are into the smaller towns are the one who gives like always require, who always invest, who always with the jewelers, like can understand the requirements from the retailer or the there is a close connection with the, because there is no other activities in the smaller towns other than coming to textile jewelry and all that. Right. So this is what we see But that. my question to you will be, as a corporate, you are sitting with a head office in Thrissur, you have expanded in Bangalore, Hyderabad first. Now when you go to a small city, let's say like Shimoga, or you go to a small city like say Belgaum, tier 2 cities, or whichever smaller cities we name it, how do you identify the needs and the requirements of the designs and the preference of the consumers in that market? So we do make a market study when we look into smaller towns. We make a study what is a real requirement of the customer or what each competitor does, what designs they are providing with, and what is the capacity of customers to buy any income, what specific income in that location, like whether agriculture income or whatever it is. So what is the population in each town? How the competitors do, what So a they lot keep. of research goes into this. Yes. So we make a study, visit the showrooms, find out from the customers. How long is this work goes It may on? take around, maybe in a month when you look into the town, at least make a study 1 month, how the towns, the customers are That's it, buying. 1 month you can complete You can understand what, because we have showrooms which is maybe 45, 50 kilometers in nearby. the radius there. So our team may go and find out what is the competitors feel, how the walk-ins are there. On basis, they will see what designs are selling. And it is easier when you have showrooms 40, 50 kilometers near to you to understand the market is easy. After all, you are selling jewelry, which gives more, value that wherever we go, we sell, whatever we sell, we give 100% buyback on gold jewelry or diamond jewelry, precious. So that is a trust we can give the customer to. So we see what is the, once you open the store within 6 months, there will be a stability period where you can understand whether more requirement. Depending on that, you can change the products. I have a lot of follow-up questions, but I will now go to Ramesh Anna. Ramesh Anna, like what you started with the one store in Madurai and then you became the king of Tamil Nadu in tier 2 cities. You never went to Coimbatore first, or you didn't go to Chennai first. You went to smaller towns, Shivakashi, you went to Rajapalayam, those markets, and you became a tier 2. You got 60 stores in a short time, in 5-10 years. So what was the thinking behind going so aggressive on tier 2 cities in Tamil Nadu? Thank you for your question. भैया एक्चुअली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रिक्वायरमेंट है. अच्छा. उधर का भैया का बात अलग है, हमारा बात अलग है. What is, we never think about our competitors. Okay. What service can we provide to our customers? Right. आपके पास जो है, stand on your strength. Right. आपका प्रोडक्ट में अच्छा कॉन्फिडेंस है, सर्विस है, भाव है, सो आप रख दो. आराम से इधर नहीं तो भी उधर चलता है, उधर नहीं तो भी इधर चलता है. सो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में नीड ज़्यादा है, Right. अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. लेकिन क्या फैक्टर्स रमेश जी आपको आप माइंड में रखते हैं कि आपको मैं सच बोलूं, झूठ बोलूं? नहीं सच, हम पूरा आपका सच स्टोरी सुनने के लिए आए हैं. सच है तो भी हमारा कोलीग है ना, हाँ. उनको कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी नहीं देता है, अच्छा. क्वालिटी नहीं देता है, भाव ज़्यादा डाल रहा है. वैल्यू फॉर मनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए. ये इसके अलावा हमारा ज्वेलर्स क्या कर रहा है, उनके पास जो है ये देता है.
हाँ हाँ कस्टमर को जो चाहिए ये देना जरूरी है। करेक्ट। आप बोला वैल्यू फॉर मनी, जैसे Value like for money इंडिया का ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति है, योर मारुति ऑफ ज्वेलरी, हाँ जी हाँ जी, Right. डीमार्ट ऑफ डीमार्ट ऑफ इंडिया, हाँ। डीमार्ट रिटेल। हाँ। डीमार्ट तो थोड़ा हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, आपका तो आपका अच्छा मार्जिन है 12%। नहीं, मार्जिन तो कैसे बन रहा है? हमने छोटा मार्जिन में काम करता है, वॉल्यूम में पैसा बन रहा है। वॉल्यूम के कारण हमको ROE मिलता है, राइट। बट हमको कस्टमर के पास जो हम मार्जिन बन रहा है ये वेरी सस्ता है। राइट। और उसके अलावा हाँ। हम कहीं भी नंबर 1 रखने का जरूरत नहीं। अच्छा। एक मार्केट के अंदर जाने के समय टॉप 5 के अंदर है, ठीक है, धीरे धीरे 4, 3, 2 ऐसा आने का, टॉप नंबर 1 आने का जरूरत ही नहीं, बट पूरा मिलकर टॉप 1 आना। Right. दैट इज Combination of this is your own self-developed strategies. हाँ जी, आपने कोई हम वो पूरा पहले हम 2008 से एक्सपेंशन किया। राइट। 8 से हमने इतना साल के बाद अभी महीने चेन्नई जा रहा है। करेक्ट। 18 साल के बाद। करेक्ट। रमेश जी, एक क्वेश्चन है, वो चेन्नई में हमने देखा आपका ओपनिंग में इतना क्राउड है उधर टी नगर में कम से कम 500 शॉप्स है, बड़ा छोटा। हाँ जी। लेकिन आप वो इनॉग्रेशन में नॉट ओनली चेन्नई, बाकी ब्रांचेस भी आपने ओपन किया, त्रिची में देखा, और इवन जो सालुकास, वो फर्स्ट डे को इतना क्राउड कैसे लेके आते हैं? क्या कुछ फ्री देते हैं आप गोल्ड उस दिन? हाँ नहीं, हमारा सेवा का बारे में सबको जानते हैं। एक बात सुनिए, हाँ। चेन्नई तो 60th शोरूम है। करेक्ट। हमारा 59 शोरूम का कस्टमर, उनका भाई, उनका रिश्तेदार, सब लोग उधर है। इनवाइट। अच्छा, चेन्नई में इसको 1.5 साल के पहले से हमने काम किया। उनका कस्टमर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब लेकर हमको ईमेल करता है, ऐसा करने वाला है। फैंटास्टिक। सो प्लान एंड प्रिपेयर, बहुत अच्छा काम करना जरूर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यू आर, सो आई थिंक यू आर नाउ द लाइक a master of tier 2, tier 3 cities and also coming to metros. लोग ऐसा बोल रहे हैं। लोग ऐसा हम ऐसा बोल रहे हैं। करी जी, आप कर्नाटका फेडरेशन का चेयरमैन और हुबली में आपका 100 इयर्स लेगेसी है ज्वेलरी शॉप का। अभी जैसे हुबली धारवाड़ का हम बात करते हैं, जब मैं आता है उधर अभी भी छोटा ज्वेलर्स वो ओल्ड स्टाइल में है, अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेटाइज नहीं हो रहा है, मॉडर्न नहीं हो रहा है, तो उसका ग्रोथ अभी धीरे धीरे ख़त्म होएगा, वो बंद करेगा शॉप, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन एग्जैक्ट ग्राउंड में छोटा ज्वेलर्स ग्रो कर रहा है कि डाउन जा रहा है, क्या ग्रोथ है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पहले तो ये बात है कि जो आप समझ से बोल रहे हैं वो सही है। अभी जो ओल्ड मार्केट जो है वहाँ पे अभी अपडेट नहीं हो रहे वो लोग, लेकिन जैसे भी अभी ब्रांडेड जो अभी मलबार आ गए, कॉर्पोरेट जो आ गए, वो आने के बाद में अभी लग रहा है लोगों को कि भी हमको भी अपडेट होना है। वन थिंग इज़ दैट कि वो लोग आने से हमको भी समझ में आ रहा है कि भाई ज्वेलरी में अभी हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और ये कहाँ तक पहुँचे हैं, ये जो गैप है हमारा वो हमको अभी कवर करना है। एंड One thing is that simple question है, 100 ज्वेलर में एग्जांपल, ओके, हुबली में छोटा मार 100 में से कितना ज्वेलर ग्रो हो रहा है, कितना ज्वेलर नीचे जा रहा है, अप्रोक्सीमेट? ऑलमोस्ट सर 70% ग्रो हो गए सर। 70% ग्रो हो रहा है, 30% अभी होना है। अच्छा। एंड रीज़न इज़ दैट जो क्वेश्चन आपने पूछा कि 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में ज़्यादा ये कॉर्पोरेट क्यों आ रहे हैं, द रीज़न इज़ दैट सी 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन 2 टायर एंड 3 टायर्स ज़्यादा है। ओके। और उनका इन्वेस्टमेंट एक ही है, सेफ इन्वेस्टमेंट, वो समझते कि गोल्ड में ही करना है। एंड इवन एग्रीकल्चर और जो टाउन के जो भी इन्वेस्टर्स है लैंड, वो भी सोचते कि देयर आर ओनली 2 ways टू इन्वेस्ट, आइदर इन लैंड और इन गोल्ड, बट गोल्ड इज़ मोर सेफर। वो ऐसा समझ के 2 टायर में अच्छा बिजनेस है। करेक्ट।
तो लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए ये कॉर्पोरेट चेन स्टोर आके अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं कि आप लोग जो लोकल ज्वेलर है उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर रहे हैं? या सी दोनों भी है सर कि अभी ये लोग आने के बाद में वी हैव लॉस्ट सम कस्टमर्स You lost some customers. वी हैव लॉस्ट इट बिकॉज उतना हम अपडेट नहीं हुए या तो उतना इन्वेंट्री नहीं है और इतना हम डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते उनको। लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को और उनसे हम बिजनेस रिटर्न आने का चल रहा है अभी। लेकिन वन थिंग इज़ दैट क्योंकि मेट्रोज अभी कुछ ऐसा भी हुआ कि ज्वेलर छोटा ज्वेलर्स बंद कर दिया है शॉप? ऐसा नहीं, बहुत रेयर, रेयर वेरी रेयर। ओके, राइट, ग्रेट। आदर्श भाई, you are I Good think afternoon. good afternoon, third or fourth generation retailer in Mysore? Fourth generation. Fourth generation legacy brand, A. Shankar Shetty and Sons, and also now the young president of Mysore Jewellery Association. How many jewelers in Mysore? Mysore has about 780 jewelers Registered record. On record, okay. but practically what works is about 10 to 15 of them. Only 10 to 15 are roaring the business, Yes. getting the major. All right. What is the reason behind that? As you said, in simple terms, either you change or you perish. Right. Change is required in every field. Those who don't change, सोचेंगे मेरा customer है किधर भी नहीं जाएगा, those days have gone. Simple thing is, you have to change by aping the corporates. You can't beat the corporates, you just ape the corporates. Ape means follow them. Yes. वो क्या कर रहे हैं, क्यों उसको धंधा हो रहा है, हम लोगों का क्यों नहीं? They have transparency, they have systems in place, and they make stock rotations, they give new designs, they make a market survey, they Right. look at what is the need of the person in this market. Right. As a traditional jeweler, we can't make so much of rotation, but at least we can use technology and update the customers with better services. Right. जैसे उसको कीप इन टच सोशल मीडिया में हो या उसका सॉफ्टवेयर में ऐप्स डाउनलोड करने को छोड़ दिया और नया नया डिज़ाइन डाल दिया. दी प्रेजेंट जनरेशन इज़ मोर इनटू दे वांट एवरीथिंग इन देयर हैंड ऑन द मोबाइल. द अर्लियर जनरेशन बिलीव्ड ओनली इन टच एंड फील. And relationships. Yes. Even now they want the touch and feel, but it's at the final stage. पहले देखना है, उसके बाद उसको पसंद आए तो दुकान पे जाएंगे, खरीदेंगे. The earlier generation they used to say, okay, this is my jeweler blindly. Okay, भाई जो डालना है डाल But दीजिए, दे generally, दिए. sorry to interrupt you, Adarsh, generally the perception ऐसा idea है कि छोटे शहर में relationship का बहुत महत्व है, lot of importance. Yes, it जैसे does. आपके father से Yeah. वो आप फैमिली ज्वेलरी लिया तो उसका बेटे भी आपका शॉप पे आएगा. अभी वो ट्रेडिशन कम हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग. Yes, it is. There are two reasons for that. ओके. One reason is presently it's the card culture. When I say the credit card culture, unlike the earlier generation, you don't give them parking, they'll park 1 kilometer away, they'll walk to your store, they'll say, ये मेरा family jeweler है, मेरा माँ ने दिया, दादी ने दिया, I want to take from this store, whatever is there, select in that. The present generation has made their living, they have got a lot of disposable income, the inheritance of money is less. So when they have not inherited, it's their money. They say, इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो. जिधर भी पसंद आया, swipe your card, take your jewelry and walk away. That integrity of that Loyalty is reducing. is reducing. Another reason for that is quality. Earlier days they used to say, this is my family jeweler, and we used to have 100% quality. Now there is trust, there is hallmark. Whether it is Joe Sulukas or Shankar Shetty and Sons or Lalita or anybody else, everybody is giving the same quality. So what is the USB a customer has to go to a particular store? Yeah. This even till And actually today, it's the other way around. Sometimes the family jewelers' earlier quality was not up to the mark. Yes. So they found out and they felt cheated, they felt let down. correct. Any jewelry has to come for recycling within 7 to 10 years. That is the real test. When it comes back, they should either appreciate the jeweler or they'll scold the jeweler. If they appreciate, they'll come back. Right.
And smaller towns, as you said, disposable income is what is making them buy jewelry. Same type of income, say if there is 5 lakhs of amount in a person in a metro and 5 lakhs of amount in a village. The person in a metro, 5 lakhs, he'll say, take an iPhone, go for a holiday, stay in a star hotel, Correct. go for a foreign tour. A villager, first he said, 5 lakh में पहले 2 लाख सोना में डालो, बोला 1 लाख बैंक में डालो, 25,000 लैंड में डालो, अभी जो बचा उसके खर्चा करो. It's a reverse formula. perfect. That's the reason it's tier 2 and 3 which are prospering. Very interesting. I'll come to Varghese bhai. Varghese bhai, you as a corporate jeweler, chain store jeweler, you have system of ROI. You look at every store, what is my investment in the year, what is the return I'm getting. So when you compare your returns with the metro stores and a smaller stores, where is the returns you're getting more? If you compare to the metro and the two-tier, I think the two-tier ones may give much return more faster because the inventory is very less compared to the metro stores. stores, The okay. size of the store, the expenses, the rent, the number of Correct. employees, Employees. all these. when you Cost of calculate- living is less. And advertisement, you don't need to do that much how you do. And the rate of the, and marketing, the rate of the cities are very high. Very high. And the rate of the marketing cost, Correct. all these are very high in the metro towns compared to the two-tier. Right, right. So I think, and it depends on the sales, how you perform in two-tier, three-tier. So It may give smaller more towns- return. Return on How much investment can percentage be, higher you get returns in two tiers? if you see every town or every. This is going to be a two-tier- secret because tomorrow everybody is going to Now open if you more look into stores in Tamil छोटा Nadu, town. do very- बड़ा store में कोई नहीं खोलेगा. Very सब good in, छोटा town. if you say Tritiya, Tanjavur, Kumbakonam, all these areas gives good return. Good returns. Because of agriculture and all that. So he know more than me. Yeah. So those areas are giving good returns in the long time. And the stores and the rent are And very... average billing in a metro and a tier 2 is same or there is a gap See, difference? now, because of this PAN card issues and all that, because of gold price, the 2 lakhs are the maximum acceptance of cash in the Cash, store. correct. So that advantage, maybe single store owners can get that benefit where we are all into a system where we are आदर्श losing, भाई को advantage है. yeah, where we are losing a lot of customers where we are not able to accept the cash. Sir, So that is a small disadvantage when you go to the you smaller don't- town. you don't people, break we the cannot bills? manage cash business. You don't make 3 bills, 5 bills, ऐसा नहीं बनाते? Bills will be the same, but the quantity of the purchase in cash are more to the single store, and some single store are giving more offers like In metros it's simple. They say swipe 25 facility. lakhs, one card, they have big card limits. So Easy, these all metro is corporates easy. cannot encourage all this. So Cash we are you can't yeah, encourage. so we are losing a lot of Tier 2 customers, has more cash. and we cannot accept cash above 2 lakhs. No, So but customer has more cash in tier 2. there are into tier, the agricultural income and all that are coming in cash. So these are more encouraged by the smaller Family, town or smaller single store where they can, I don't know how it is, but usually that has given a negative to the corporates when they go to a smaller town. Cannot do the cash business, or there are a lot of credit facilities they give. Acha. to The family jeweler will give family on store. credit, take That it. cannot be done by the Corporate corporates. jeweler. I think this will be the same. रमेश जी, हाँ जी ये ऐसा कॉर्पोरेट टायर 2 में ज्यादा कैश आता है. जो आता है लेकिन वी आर नॉट डूइंग ओनली कानून के As per the system, legal सिस्टम system. कानून के सामने कर रहा है अभी खेती का लोग भी अच्छा चेंज हो रहा है क्योंकि उनको टैक्स का बेनिफिट टैक्स नहीं है ना इनकम टैक्स नहीं है करेक्ट करेक्ट. इसलिए ये लोग अभी पहले जैसा नहीं अभी ज़्यादा चेंज हो रहा है ये लोग भी ट्रांसपेरेंसी है they- उनको they have the पैन कार्ड एंड और आधार कार्ड. एंड द बैंक ट्रांसैक्शन पहले जैसा नहीं अभी अच्छा चेंज हो रहा है और ROIs आपका तो ज्यादा टायर 2 है. टायर 2 है टायर 2 में क्या है कच्चा कम है खर्चा वॉल्यूम अच्छा है Okay. एवरेज व्यापार हमको 18 से 25% ROI आराम से मिलता है. मार्जिन इज गुड. वो लेकिन क्या भाई कभी कभी 3 साल 4 साल भी हो रहा है
टाइम लगता है एस्टैब्लिश करने के लिए। एस्टैब्लिश करने के लिए, बट ROI 18 से 25% आराम से मिलता है। वेरी गुड। एंड ऑल्सो आपका जो सैलरीज है, सपोज चेन्नई में डिफरेंट होगा और तंजावुर में डिफरेंट होगा, त्रिची में डिफरेंट है। ये तो ठीक है, लेकिन हमको क्या है, पहले जैसे नहीं है, अभी उधर लेडीज बहुत अच्छा है। पहले हमारा कंपनी में 65% लड़का था। अच्छा, अभी स्टाफ रेशियो। स्टाफ रेशियो अभी 55-45 हो गया, 55 लेडीज हो गया। 50 more ladies, more women. Very good. Give them a round of applause, please. That is what we need, more women empowerment. या एम्पावरमेंट अच्छा है, ये लोग अच्छा काम कर रहा है। सेल कन्वर्जन भी अच्छा होता है। सेल कन्वर्सन भी अच्छा हो रहा है, उनको भी बहुत सेफ है, एंजॉयमेंट है, AC में है। Correct. उनको बहुत Respect है। रिस्पेक्ट है। और इसके साथ ये लोग सेविंग कर कर हमारा पैसा जो लेता है, हमारा पास चिट डालकर सोना लेता है। ये भी हमें जी सैलरी देके वापस ले लेता है। हाँ भैया, क्योंकि उनको शादी grow के होना है। लिए, या उनको शादी के लिए हमारा पास सोना लेता है। करेक्ट। सो 4-5 साल के बाद उनको शादी करके नया आता है। सो और वो भी आपके बारे में बात करेगा, अच्छा कंपनी, अच्छा ओनर है। वेरी गुड। करी जी, तो ये टायर 2 सिटीज़ में जो एडवांटेजेस हैं, जैसे लोअर कॉस्ट एंड ऑल दैट, और प्लस रगीस भाई ने बोला कि कैश भी आता है, तो आप जैसे जो सिंगल स्टोर है, फैमिली, आपको एडवांटेज है उसका? आप हाँ, देयर इज एडवांटेज, यस देयर इज एडवांटेज, हाँ। बट लेकिन क्या है, अभी इवन एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका APMC से डायरेक्ट चेक वो इसके नाम से जाता है, फार्मर के नाम से Farmer के जाता नाम से। है। सो नाउ दे आर रेडी टू पे द अकाउंट में लेने को रेडी है। ओनली थिंग इज दैट उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए, और वो रेडी है उसके लिए, क्योंकि सभी अकाउंट अभी फार्मर्स का जो भी पैसा आता है सीधा बैंक अकाउंट में जा रहा है उनका। हाँ। तो दे नेवर हेजिटेट टू टेक बिल्स एंड ऑल। वो तो दैट इज द प्लस पॉइंट देयर। And in terms of the cost, because you don't have a bigger city showroom, you can't compare it. Yeah. But generally, what we get a feeling is that Tier 2 has a lower cost. या कंपेयरिंग टू देम इट इज़ अ लोअर कॉस्ट। लेकिन ऐसे भी है कि अभी देखो कि सर्विस करने वाले जो है उनका भी कैसा होता है बिजनेस 2 टायर 3 टायर में। एक तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ कम है, right. सो दे हैव गॉट ओनली अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और सिंगल स्टोर में एक प्लस पॉइंट है कि ओल्ड गोल्ड देते हैं, नया लेते हैं, तो उसमें भी मार्जिन मिलता है। Right. कंपेयरिंग टू दैट ये थोड़ा Both sides. बोथ साइड्स है। यस This thing, Adarshi. So Mysore is now, like example we are taking is a Mysore is now becoming modern. You have a lot of malls and all that. So Yes, even yes. the family jewelers are getting their showrooms more modernized. What are the trends? Like you did your showroom renovation. Right. What is the trends? Like any business, whether it's a hotel or a industry or a jewelry store, I feel max to max within 8 to 10 years you have to change, come up to date with your other peers. If you are sitting with your old furniture and Old showcases, display, you'll have only your old turnover. If you have to have a better turnover, you have to change with times, and that is not an expenditure, it's an investment. Right. Well, apart from your question, I would like to differ with what they said about the PAN card issue. PAN card, huh? With due respect, the villages right now are coming forward to give the PAN card without any hesitation, Okay. because they deposit money in the bank and you ask them PAN card, they'll give you. The hesitation is more with the people in the cities. Uh-huh. They are people who are working from 10 to 5 or any of those fellows, because for them already the tax is cut at source, TDS. So as TDS is there, the moment I asked a PAN card, they say, अभी इतना भर के ये पैसे लेके आए, उसके ऊपर आप PAN card पूछ रहे हैं, हम नहीं देंगे. They're scared. But the villager has no TDS, so he has no problem at all. That is the present trend as such. Very nice, wonderful.
So, sir, any other closing remarks? We'll open it up for the Q&A session. And I think this has given a good insights on what is happening in the smaller cities. And even I feel because metros are getting saturated, we have on one lane 20 stores, 5 brands. So customer is spoiled for a choice, but whereas in smaller towns they have savings, so they're looking for better designs, better quality, better brand. So there are more opportunities over there. रमेश जी कुछ लास्ट आपका रिमार्क्स फिर हम क्वेश्चन सेशन लेंगे कुछ आपका मैसेज एनी एडवाइस फॉर द इंडस्ट्री भैया एक ही है हमारा बिजनेस में बिजनेस पीपल क्या क्या गलत काम कर रहा है क्या है हमारा बिजनेस पीपल व्यापारी लोग को कस्टमर से पैसा इमीडिएट आता है स्मॉल सेविंग्स ऐसा और डीलर के साथ पैसा 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा परचेस कर रखता है सो इसलिए हमारा पीपल क्या कर रहा है कंपनी से पैसा ज़्यादा लेता है बाहर that is the main point they are doing other business diverting the fund diverting the funds that is the major issue real estate property real estate ये है वो है सब ये जाने के बाद उधर पैसा लॉक हो रहा है इधर का इंटरेस्ट देना जरूरी है सब so converting the money is the big issue you want to put the business back to the business for only growing business it. खाने के लिए लिविंग करने के लिए पैसा ले लो इसको ज़्यादा पैसा ज़रूरत नहीं है That's what DMart philosophy. They go there, they have every cost measured, and from that profit only they open the new showroom. That is how DMart does. Okay, sir. We are open for any questions. We have very important. Not? Yes. Yeah. Because this is, as you said, the fund is diverted or anything. Most of them lose the passion in doing the jewelry business maybe after 25 years, 30 years. They see the profit percentage has gone down, the gold prices have gone up, the business is going down. So some feel like, why not we do something else and divert the fund, which may not be working well. So unless you don't have the full passion in you to do the business, you divert your fund. So he has full passion. He has full passion for last, I think, 30 years. So, Pura 100%. so the youngsters see there are a lot of other opportunities come in the. Yeah, he is also right. उसको उतना business में interest नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक real estate का, एक apartment बनाएगा, एक villa बनाएगा. Don't sail in 2 boats. Don't sail in 2 boats. Sail in एक ही boat. Right. Very That is the your पैर 2 बोट में be focused. हाँ जी Perfect. Right, sir. So shall we take a? We have a question from a lady. Actually, Can you, ma'am, please introduce yourself? So actually, I'm a student. My name is Vindhya. My question is actually, I'm a bit curious to all the 4 panelists. So what are few requirements you are hearing from the Tier 2 and Tier 3 cities? I mean, in metropolitan cities, depending on the advertisements and brands and like series, movies and everything, we have specific requirements like वो heroine क्या पहना मुझे वो ही चाहिए ऐसे. So how is it in Tier 2 and Tier 3 cities? Have you been receiving any specific requirements or styles? How is it going on? That's it. You got the question right. She's asking that a lot of Bollywood or local film industry influence is there on the consumers. In the Tier 2 cities also, you see the same trend कि वो जो celebrity पहना है, वो जो film star है, वो influence है उसका. Any feedback? Yes, one by one, everyone. है बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा है 33% ऐसा माल चाहिए ये चाहिए सलमान खान का ब्रेसलेट ये ब्लू कलर कंकर रखने वाला फिरोजा ऐसा चाहिए लेकिन ये लोग मोस्टली क्वालिटी चॉइस प्राइस वैल्यू फॉर मनी ये देने तो भी लेकिन मेट्रो ये Tier 2 टायर में ज़्यादा ये सपोज पोल की एग्जांपल अनकट ये सब नहीं चाहिए गोल्ड ज़्यादा चाहिए गोल्ड ज़्यादा राइट
Varghese bhai, any comments on that? When you say in 2-tier, 3-tier, people all look into buying value for the Value money. for money. So whatever they buy, what quality or what purity, when they sell back or when they exchange, what the price they get is a big concern to the customers who are into the smaller town. If you are into the metros, they are not very concerned about how they can sell it or what is the exchange policy and all. But when you go into that smaller town, where you are seeing your customer always, you should be very transparent to them. Right. They should not be cheated. They should not be given anything for what they are paying. So these are the ones when you are into 2-tier, 3-tier, we have to be very careful with dealing with the customer rather than how we are with the metros. Right. I feel. Kariji, what is that question? Any feedback? हाँ अभी I think हेलो अभी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेट्रो सिटीज़ में या 2-टायर सिटीज़ में या 3-टायर सिटीज़ में लोग डिमांड करके आते हैं कि ऐसा हमने देखा इंस्टाग्राम पे ऐसा आपके पास है क्या नहीं है द थिंग इज़ दैट हाउ उसके लिए हम कैसा उसको आंसर दे सकते हैं या उनको उनका how do you fulfill their need? तो एक उसमें बात है कि समुद्र के किनारे बैठ के रेती बेचना आना चाहिए तो ही सेल्समैन है वो हाँ हाँ. ऐसा क्योंकि हमारे पास जो है वही अच्छा है दुनिया में बाकी सब अच्छा नहीं है ये बोलने की कैपेसिटी हमारे पास रहना मैं चाहिए इससे 100% एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आपका हाँ या दैट इज ट्रू लेकिन That जो is अभी a- ट्रेंड है भैया दैट इज अवर ज्वेलर्स वीकनेस Weakness? पूरा इंडिया में हाँ. पूरा इंडिया में और छोटा छोटा गांव में जो बोल रहे यही हैं ना- हमारे पास सबसे बेस्ट है ये. नहीं नहीं ये लोग इधर ही बैठता है तो कोई भी परचेस करने के लिए भी ऐसा एग्जीबिशन आया नहीं जो व्यापारी लोग उनको हाथ में देता है 2 टका ज्यादा बोलते भी लेता है उनको भी क्रेडिट मांगता और है जो भी स्टोरी ये बोलते हैं वो हाँ. सुनना चाहिए. हाँ. अभी आज भी एजुकेटेड है नहीं कस्टमर. चेंज तो हो गया अभी चेंज हो गया. तो हमको भी अपडेट होना पड़ता है और हो गए हम भी नहीं, अगर वो कस्टमर मांग रहा है, आपके पास इतना सप्लायर होना चाहिए, इन्वेंट्री Yes, होना चाहिए, yes, yes. उसको सप्लाई करने के लिए उसको देना चाहिए. करेक्ट रमेश जी? Yes. आदर्श भाई, एनी स्पेशल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द Nothing. They all have covered the issue. covered the issue. The main thing is whether they look at any actor, actresses, Instagram or anything. But there is again a limitation of choice in a tier 2 city. So they have to settle down with whatever is available. Unlike you come to a metro, you have about 100 big stores. In a smaller town, you have about 5 or 10 stores. In that 5 or 10 stores, who catches the prey is the person who is transparent. Right. That is the only thing which works. And that is where probably the branded chain stores have advantage. Exactly. Because they have changed to the changing times. The others haven't changed. Because the mindset is अगर वो सलमान खान नेकलेस है फैमिली ज्वेलर के पास नहीं होगा, बट मे बी तनिष्क के पास, जोया लुकास, तंगामेल के पास मिलेगा, right? But one more thing is, chain stores have huge inventory, but the individual stores can make a change by networking. Come to different shows, you keep contacts with suppliers, you want something, your customer is asking, you know where it's available. That thing has to happen. As he said, if people don't move around, don't go to different places, don't visit different shows. Just in time order, Yes. just in time. Don't That- put money in the inventory much, right? Toyota model. Toyota model. Correct, Ramesh Arna. Okay, we have Chetan Bhai here, we have Malika Arjun ji here, a very successful tier 2 retailer from North Karnataka. पहले चेतन भाई sir. Sir, I think first I would like to congratulate Sumesh bhai for taking a great discussion on growing jewellery demand are the from 2 and 3 speakers. tiers. No, but moderator is more important because he can take out the things. Ajay. Moderator is the main key. Anyhow, we have a legend sitting over here. We have a Adar sir from Mysore from 100 years, more than 100 years. We have Kari sir, more than 100 years store. Ramesh sir, to I think. Touching 100 stores. Not touching, he is aiming for more big. So I think 60 is done and 3 more stores coming in Chennai. And congratulations, sir. The first day you got 17 crores of sale. A big round of applause. Coming after 30 years to Chennai. And you made this possible. And after that you're opening. But my question to Varghese bhai, my dear friend. I can't forget you. You're a very good friend of mine. But sometimes you're tough, but you're good. Anyhow. So my question to you all is, when we go to few people, few stores, I personally visit them.
they have one problem. Always they will tell there is no business, no profit, no business, no profit. There are few people always crying 365 days. I'll be very frank. And few people like you people I meet, you always tell business भी अच्छा है, profit भी अच्छा है, we are doing थोड़ा slow है, कल pick up हो जाएगा. I want you to speak about those negativity. Why they are so negative? And if what is the reason their mindset? Because I have 10 jewelers in my mind. I am following from 17 years. They are always telling sale नहीं है, sale नहीं है, sale नहीं है. And they are always negative. How to have a positive mindset towards the jewelry industry? So I want everyone to guide all the people who are negative how to have a positive approach towards the sale or towards our jewelry industry. So I think Ramesh sir, आप पहले very interesting आपको question. थोड़ा ये हमको चालू करना चाहिए. हरे कृष्णा. हाँ. कैसे आप सोच रहे हैं वैसे आपको पहले पुराना ज्वेलर्स नया ज्वेलर्स दोनों को क्या डिफरेंस है? पुराना ज्वेलर्स ज़्यादा प्रॉफिट है भैया. पुराना ज्वेलर्स में ज़्यादा प्रॉफिट है उनको. अभी प्रॉफिट कम है ये तो ठीक है, बट वॉल्यूम ज़्यादा है. वॉल्यूम ज़्यादा है. सो द चेंज शुड बी कम फ्रॉम देयर इंटायर फ्रॉम देयर माइंड. ये नेगेटिव ज्वेलर्स they don't want to spend, they don't want to work, they don't want to change, they want to live lavish. ये दुकान खोलना उनको व्यापार आना. पहले व्यापार नेचुरली चलता है, अभी व्यापार हम चलना जरूरी है. ये दोनों को अलग अलग का. सो वी हैव टू ड्रिवन द बिजनेस. सो ट्रम्प कार्ड इससे आपका हाथ में रखना जरूरी है. सो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, टीम चाहिए, सर्विस चाहिए, वैराइटीज चाहिए, सब रखना चाहिए. भैया ने बोल दिया ना 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में ये लोग आता है हमारा पास, कस्टमर मांगता है ये चाहिए वो चाहिए. सिम तुरंत हम लैपटॉप में पूरा दुकान में जो स्टॉक है 40 ग्राम में हारम चाहिए 200 दिखता है. हाँ. तुरंत उनको 1-2 चेंज हो रहा है, 2 दिन में उनको बिलिंग हो रहा है. सो टेक्नोलॉजी यूज़ करना एंड यू हैव टू रेडी टू स्पेंड आल्सो. पुराना व्यापार लोग को जो पैसा आता है पूरा हमारा हाथ का बीच रखना जरूरी है. ये अच्छा नहीं है. यू हैव टू स्पेंड. करेक्ट. सबको देना जरूरी है. वी हैव टू ग्रो टुगेदर. एंड ऑल्सो छोटा गांव में पहले भी 20,000 15,000 को आदमी चाहिए. ये पूरा सेवा करना जरूरी है. कैसे कर सकते हैं आप भी? 2 साल में डबल होना चाहिए, 3 साल में डबल होना चाहिए. आपको असिस्टेंट भी होना चाहिए ना. करेक्ट. ये लोग इट हैज टू बी टू वे ट्रैफिक. नहीं अच्छा तो मैं लेकिन आपका क्वेश्चन कि कुछ आप कस्टमर आपका हमेशा नेगेटिव है, उसका बहुत रीजंस हो सकता है. दे मे बी डूइंग वेल. वो खाली ऐसा भी हो सकता है खाली आपसे डिस्काउंट लेने के लिए आपको बोल रहा है. वो ऐसा होता है आपको पेमेंट नहीं देना है इसके लिए बोल रहा है. मी अच्छा जनरल माइंडसेट ऐसा है. कि हम इसमें गलती से आ गए हैं. Like they talk all nonsense. Sometimes I want to understand their mindset as you. But they are genuinely like business is wrong or they are saying. That is I'm not able to understand. So I'm भैया ओपन फोरम में मैं बोलता हूँ 800 to 290 270 का भाव में एक ही दिन में 40 किलो मैंने बेच दिया. 80. कितना भाव है? क्या उतना बिजनेस है भाई? देखो उनको सेवा करो, पैसा ऑटोमेटिकली मिलता है. आप कुछ भी देता नहीं, कुछ भी सर्विस करना नहीं, डिजाइन दिखाता नहीं, कहीं भी आता नहीं, आप जगह में बैठता है. करेक्ट. क्या करेगा? यू हैव टू वर्क हार्ड. देन ओनली
But you get can the take the customer. horse to the well. You can't make them drink. आप उनको सिर्फ एजुकेशन दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है एग्जीबिशन में, लेकिन उसको बिजनेस करने का वो पैशन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? Is recorded. नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बात की. I have been told मैंने check किया. by the backstage team that we are already completed our time. No, we are not late. We are just done our time. So maybe if you have any other questions, one to one, we can take one last question, short. Okay, sir. Last. Mike, please. Very quick, sir. A big hi to all of you. Introduce yourself, sir. I'm Dr. Rajesh. I'm from his place, Trishur. We don't know each other, but I know some of your family members. I'm into. They're all big shots. Yeah, I'm a small shot, so. So what I was saying is like, first let me ask you something. I'm a wholesaler, manufacturer and wholesaler. Okay. So in case I want to approach some of you, how easy is it? How do I do that? That is one question. The other thing is about talking from a Kerala perspective. I think tier 2 cities are vanishing. There's a lot of expansion going on. Right. Because parking, before people used to come to the shops in scooters and buses, but now everybody's got a car. So it's expanding. It's going out of the main cities. So that's one factor I think they didn't talk about. But my main question is other one. But what is that question? More cars means more parking space required? Yes. Okay. They have valet parking. No, I'm telling that's the reason it's expanding. And there's another factor. The purchasing power of people is also getting, our country is progressing real good. GDP is getting better. Right. But my main question is the other one. How do I approach you people with my products? He's actually asking a question on behalf of Ramesh Anna. Every wholesaler manufacturer here, अगर उनको आपके साथ बिजनेस करना है, आप सबके साथ, तो कैसे अप्रोच करना है? बोलिए. Very simple. Very simple. Okay. Product, finishing, perfection, bow, service. Finish. That's all. इसलिए मैंने थोड़ा जोर से बोला. इसलिए मैंने ये तो आवाज उसी समय थोड़ा जोर से बोला. यही है. बस. I think you got it. और 1 साल 2 साल हमारा पास व्यापार करो. आपको हर वही 24% मिले तो भी कंटिन्यू करो. Very good. 24% आ रहा है. हाँ भैया एक बात सुनिए. हमारा पास जो व्यापारी है, हम उनको विन करने के लिए जो मदद हम करता है. आपको बैलेंस शीट के अच्छा करने वाला है, आपको बैंक से लोन मिलने वाला है. वी आर जॉइंट टुगेदर, वी आर ए फैमिली. Very good. So हम अकेले विन करना अच्छा नहीं. आप भी विन करना भी हमको अच्छा है. Fantastic. Very good thought. ऐसा मेंटालिटी है. हमारा पास 40 साल के पगले व्यापारी है. आज भी मैंने उनके पास माल लेकर आता हूँ. Fantastic. आपका सवाल का जवाब मिल गया. धन्यवाद. Thank you so much. Over to you. Thank you so much for this lovely session. A huge round of applause for our moderator and all our panelists. As a token of our appreciation, we would like to felicitate you. For that, I would like to invite Mr. Shamal Pote, Director, National Exhibitions, GJEPC, to please come up on stage and felicitate all our guests with the mementos. We would also love to call Mr. Mahendra Tayal, our Regional Chairman, on the stage.
Thank you so much once again. A huge round of applause once again as we close this session. Up next, we have a next session on exploring alternative funding options such as venture capital and private equity for jewelry startups. This session is starting in the next 5 to 10 minutes. We request you to please hang back. Our moderator, Mr. Anil Prabhakar, and our speakers on the panel are all ready and set. We request you to please hang back and attend the session. Thank you. Very nice to see Mr. Biju Kurian here, our very eminent and one of the pioneers of our jewelry industry corporate business. Take